लेकिन वो सारे इंडस्ट्री के लोग थे, एम्प्लॉयर्स थे, सीईओज थे। तो इसका मकसद है जीएसटी ने जो टारगेट किया इंडस्ट्री को, मैं समझता हूँ कि ये ज़बरदस्त है। और इंडस्ट्रीज कहाँ जाएंगी, कैसे वो अपनी सेविंग्स को कम कर सकती हैं, और कोई तरीका नहीं है कि अनलेस वो सोलर पे जाएं। बिल्कुल। तो इंडस्ट्रीज को सोलर में आना चाहिए, ये मैच्योर टेक्नोलॉजी है और अब ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। और एक ही तरीका है, आप अपनी बिलिंग को अपनी कम कर सकते हैं वो सोलर के जरिए। दूसरा है कि एनर्जी मैनेजमेंट, आप एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इंडस्ट्रीज के अंदर लीकेजेस हैं बहुत सी, लो एफिशिएंट इक्विपमेंट है, आप उनको पहले एफिशिएंट बनाएं। लाइटें हैं, एलईडी लाइटें हैं, पंखे हैं, कंप्रेसर्स हैं, बॉयलर्स हैं, ये सारे की एफिशिएंसी इंप्रूव करने से आपका लोड कम हो जाएगा। फिर आप सोलर और रिन्यूएबल जो है, दैट इज अनदर पार्ट विच कैन सॉल्व योर इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को मैं कहूँगा। देखिए उनका होता है कॉस्ट का। तो आप ये समझ लें कि आपने एक छोटा सा एनर्जी प्लांट लगा लिया, then you have the opportunity to invest it. If you have that range, why not? Why wouldn't you do it? That's actually a really good. Cleanest और नीटेस्ट चीज होती है वो एक्सपेंसिव होती है। कोइंसिडेंटली हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो नीटेस्ट भी है, क्लीनेस्ट भी है, ग्रीनेस्ट भी है और ये चीपेस्ट भी है। तो अल्लाह का ये बड़ा करम है कि ये पाकिस्तान, वैसे तो वी आर प्रॉब्ली लेट एंट्रेंट इन दिस फील्ड, लेकिन वी आर गोइंग टू कैपिटलाइज ऑन दैट, क्योंकि बहरहाल वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। हमारी अब कॉस्ट ऑफ जो रिन्यूएबल एनर्जी है, स्पेशली सोलर और विंड, वो इतनी कम हो गई है कि हमारे पास बड़ा अच्छा मौका है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे पाकिस्तान के, जिन्होंने ग्रीन कलर चूज किया झंडे का, तो दैट वाज अ सिग्नल फॉर अस के गो ग्रीन। तो ये एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम इंशाल्लाह एक ग्रीन रेवोल्यूशन पाकिस्तान में लेके आए। और ये गवर्नमेंट भी बड़ी अपबीट है इस बारे में। अभी हमने 3-4 दिन पहले अपना एक RFP 600 मेगावाट का पहली दफा पाकिस्तान में कंपैरेटिव बिडिंग बेस पे रिन्यूएबल एनर्जी हम सोलर लेके आ रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह आफ्टर दिस वेरी सक्सेसफुल पहला कंपैरेटिव बिडिंग प्रोसेस, इंशाल्लाह विल गो ग्रीन विद फुल पेस। कि अब बेशक कि जितना भी हार्श टाइम हो, जितना भी मुश्किल वक्त हो, उस चीज की तरफ देखें कि हम इसको किस तरीके से जो है वो अपने फेवर में या पॉजिटिव तरीके से जो है उसको आगे लेके चल सकते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट द इंडस्ट्रीज आर ऑलरेडी डूइंग एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव टेकन अ ह्यूज चंक आउट ऑफ इट एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स मोर ऑफ इट। Great to know. Is something that when we are using anything, any resource, we should use it in a way that we leave a sufficient amount for the future generation. Then only it can be sustainable. I've seen people grocery shopping. Let's get the carton for the Nestle small bottle. Yes. Why don't you have that 18-liter gallon that is there in your house and fill it with jugs? What is with this commercial issue? Because I think people, we need to go back to the simplicity in life, the way we used to be in our... Considering all these factors, yes, solar is the way forward, no doubt in that. But now we need to consider that how much solar we need to install. Exactly. So when you are choosing that, you have to be very careful because when we started, we wanted to install, because we had a space availability of around 8 megawatt. So we wanted to put 8 megawatt there. But then we suddenly realized that you guys came in and you told us no, you cannot install 8 megawatt. We're syncing with the engines. So because the fears were there, and at that time DSG were doing some projects, but a lot of data was not available to justify that what would happen if you put more solar load. So we went as the way DSG told us. So we installed 4.2 megawatt, and this is now we understand that why we should not put too much solar, because if you put too much solar, and when the solar achieves the peak पोजीशन पे हैं जिन्होंने डिसीजन लेना है, उनको चाहिए कि वो अपना जो एनर्जी का एक प्रोफाइल है उसको चेक करें, पहले उसको राइट डाउन करें कि हमारी इनपुट में गैस कितना है, वाटर कितना है, और सोलर के आने से हमारे पर यूनिट कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये उनको जब वो राइट डाउन करेंगे तो वो फौरन कन्विंस्ड हो जाएंगे यदि दे हैव टू ऐड सम सोलर सिस्टम, दे हैड टू, मस्ट है ये आपके। अब इसके बाद यानी कि there's no way out. It is an opportunity loss. We have quite a dire need of having these education-related, energy-related education in Pakistan, and yes, you are right that we have very few institutes, but we are expanding. Actually, the problem with us is that we don't have
lots of awareness about it. We don't market our academia with this energy sector, Definitely. but we have this need of having the linkage between academia and the market and the industry. The industry needs to have the professionals from the academic background, and they need to have their full-fledged knowledge about these things, the energy related issues. It's time to kind of reinvest into our universities and even at school levels. So it's more about you hand them the problem, they'll have the skills to solve, and in the end it's actually a success or a win-win situation for both of them. So you get your problem solved. From the university perspective, they solve the problem, so maybe they generate some knowledge out of that. That knowledge can be embedded into courses.